अस्सलाम वालेकुम। दूसरी इनिंग का आगाज़ होने जा रहा है। 138 रन का लक्ष्य मिला है चेज़ करने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज पिच के वस्त की तरफ जाते हुए लतीफ़ डार और उनका साथ देंगे कप्तान शौकत भट्ट। कश्मीर नाइट्स के कप्तान खुद बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। आपको याद होगा गेंदबाजी में भी उन्होंने शुरुआत की थी। पहला ओवर काफ़ी अच्छा गया था कश्मीर नाइट्स की दृष्टिकोण से देखा जाए। आपको बताते चलूँ, आज दोपहर यहाँ टॉस जीता पैंथर्स क्लब के कप्तान ने, उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया था। हालांकि पहली शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैच के दूसरे ही ओवर में दोनों ओपनर्स को वापस भेजा मंजूर पांडव ने, तब जाके आतशी बल्लेबाजी शुरू हुई थी सरशील और अब्दुल कयूम की जानिब से, और उन्होंने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाए। कुल मिलाकर 10 ओवरों में 100 रन बनाए थे पैंथर्स क्लब ने। फिर रफीक बाबा गेंदबाजी करने के लिए आए। उन्होंने मिडिल क्रम के साथ साथ टेल एंडर को भी सफाया किया और कुल मिलाकर 137 के स्कोर पर पारी सिमटी पैंथर्स क्लब की। कश्मीर नाइट्स 138 रन का लक्ष्य मिला है चेज़ करने के लिए। कुफवारा एक्सप्रेस इरफानुल हक गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे दूर उस छोर से जहां से पहले इनिंग में शुरुआत की थी गेंदबाजी में कप्तान शौकत भट्ट ने। शौकत भट्ट कश्मीर नाइट्स के कप्तान सामना करेंगे कुफवारा एक्सप्रेस इरफानुल हक का। इरफानुल हक लंबे रन के साथ दौड़ना शुरू किया। ओवर द स्टंप्स विकेटों पर पहुंचे। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर। विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज भी कुछ समझ न सके। 5 रन खाते में। वाइड 4 एक्स्ट्राज के रूप में ये 5 रन मिले। काफ़ी खराब शुरुआत, सटीक निशाने पे गेंद नहीं की। यॉर्कर करने के चक्कर में फुल टॉस कर बैठे, वो भी लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी। हालांकि विकेट कीपर ने बाई जानिब डाइव लगा के गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बहुत कम अवसर मिलता है, बहुत कम सफलता मिलती है ऐसी गेंद को रोकने में जब गेंद में रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो। इरफानुल हक इस ओवर की अगली गेंद इस बार कुछ बेहतर लाइन पैर से टकराई, लेग स्टंप को मिस कर रही थी। स्लिप कार्डन से आवाज़ें जरूर आई, लेकिन साथ नहीं मिला ना ही विकेट कीपर का ना ही इरफानुल हक का। इरफानुल हक ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। कश्मीर नाइट्स का स्कोर 5। बिना किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए हैं कप्तान बश शौकत, और उनका साथ देने के लिए आए हैं लतीफ़ डार, जिन्हें कबर के नाम से जाना जाता है। मिड ऑफ लगाया गया है, कवर्स में एक खिलाड़ी, स्लिप कार्डन बड़ा पड़ा है और थर्ड मैन लगाया गया है आकाश अयूब, जो स्लिप कार्डन में मौजूद। इरफानुल हक की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फुल टॉस, लाभ उठा न सके। गेंद को खेला कवर क्षेत्र की ओर। 20-22 गज के फासले पर गेंद को फील्ड किया गया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। Irfanul Haq is known as Kupwara Express. He bowls very fast, but then he has to keep his cool and composure here, because if he sprays the balls all around the wicket, he will be punished. Here is Irfan, comes in, bowls to Shaukat, and Shaukat is beaten. That's the line to bowl at. Bowl in the channel, you have got the pace to trouble the batsman. That's what Irfan needs to do at this wicket. This wicket has got some spice for the fast bowlers, and Irfan has to utilize that. Irfanul Haq bowling with the wicketkeeper standing back. Slip, a gully, backward point. Here is Irfan, bowls to Shaukat, and Shaukat is beaten. Pace and bounce can unsettle many of the batsmen in the world, and that's what exactly is the case with Shaukat this time. Got unsettled with a couple of short pitch deliveries bowled by Irfanul Haq. I was giving you the field with which Irfan is bowling. Wicketkeeper standing back, slip, a gully, backward point, a short extra cover, a cover, a mid-on, a mid-short mid-wicket. Here is Irfan, short, rising, outside the leg stump, a wayward delivery. This is waste of energy and nothing else. Irfan, as I already mentioned, he needs to keep his cool. He needs to bowl a channel. He needs to use this new ball to good effect. But so far, he has sprayed the balls all around the wicket. 2 fielders on the leg side, 7 on the off. Here is Irfan, bowls to Shaukat, and Shaukat is beaten once again. That's a good length delivery. Shaukat trying to heave it out of the ground. Knew nothing about that delivery, I can tell you honestly. Score remains at 6 for no wicket. Panthers club need wickets, and that too in a heap. Couple of quick wickets here at the top of the order can set the tone for Panthers club in this match. इरशाद भाई, इरफान का ओवर हो, 6 रन आए, विकेट ना जाए, तो मैं कहूँ कश्मीर नाइट्स के लिए ये अच्छा ओवर होगा। That was a possible opportunity, but the fielder there, too lazy, too casual. It should have been taken at this level, isn't it?
बिल्कुल, जब आपके पास छोटा लक्ष्य हो डिफेंड करने के लिए, ऐसे चांस को आपको कन्वर्ट करना है विकेट में, तब जाके जीत का सपना लिए जो आप यहाँ आए हो वो साकार होगा, वरना वो सपना सपना बनते ही रहेगा। The wicket was on there. Nasir had predicted that Irfan can't bowl over and over without a wicket. The wicket was on his way, but the fielder at third man made a mess of it. Panthers club bowlers need to convert chances, half chances. Beg your pardon, the fielders need to convert half chances. The bowlers need to bowl that channel. Irfan standing tall in the slips now. There's a third man. Third man is very wide on the boundary. There is a gully. There is a huge gap between gully and cover. Beg your pardon, at point. There is no short cover. Now a fielder comes into the short cover position. There is an extra cover inside the circle on the offside. Mudassir. Ball left arm over. On strike is Latif Dar. Defends the first ball back along the track from Mudassir lefty to pick this one in his own follow through. Mudassir, left arm tall youngster. Left arm fast bowlers are a treat to watch. It reminds me of Wasim Akram, the great Wasim Akram. Well, here is Mudassir. It's pitched up, fuller length. Latif Dar wanted to drive it, inner hop of the bat, went straight to Akash fielding at mid-on. There can't be any runs. The score stays at 7 for no wicket. Panthers club need wickets. I was talking about Wasim Akram, the legendary Wasim Akram, the Sultan of swing. Who would forget that spell of Wasim Akram against New Zealand in the 1992 World Cup semi-final? Those kind of bowlers are very hard to find in nowadays cricket. Irfan Pathan gave a glimmer of hope somewhere down the line, but then he too went and disappeared from the international arena. Wasim Akram in a T20 game would have been an ideal choice, isn't it, Nasir bhai? बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि T20 गेम जो हैं उसमें ज़्यादा गेंदबाजों की मार ही पड़ती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि स्विंग गेंदबाज काफ़ी ऐसे हैं, जहाँ तक भुवनेश्वर कुमार की भी अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी सफल रहे। जब भुवनेश्वर कुमार सफल रहे तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर सफलता मिल सकती थी वसीम अकरम को। Exactly, well said. Singles and doubles are as important as boundaries and sixes. That's what is on the back of the mind of these two batsmen in the middle. They are knocking good deliveries off on the offside, on the onside, and settling for quick singles. Brilliant display of batting so far by the two batsmen. They have not played a rash shot so far. Here is Mudassir for the fourth time in his over. Bowls to Latif. Latif drives well. It's unable to beat the fielder, tumbling fielder, and at extra cover position. That's a good stop. That was travelling. That was hit with some power. But the fielder did well there. Stopped a certain boundary. Shaukat on strike because the batsmen have crossed over. There are two slips now. That's a good delivery. Mudassir is looking very angry with himself because that delivery was not far from that stump. An extra coat of paint on that stump, it would have been pegged back. But luck on the side of Shaukat. He survives. 2 gone. It's 9 without loss. 138 रन का लक्ष्य मिला है चेस करने के लिए कश्मीर नाइट्स को। इनिंग की शुरुआत ठीक ठाक रही, कुल मिलाकर पहले 2 ओवर में 13 रन। और बड़ी बात यह है कश्मीर नाइट्स के लिए, अब तक उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाई। इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए हैं कप्तान शौकत भट्ट और उनका साथ देने के लिए लतीफ डार। इरफानुल हक पहला ओवर ठीक नहीं रहा, कुल मिलाकर 9 रन आए थे पहले ओवर में। 138 रन के लक्ष्य को अगर जहन में रखा जाए तो काफ़ी महंगा ओवर गया इरफानुल हक की तरफ से। पहला ओवर, अपना दूसरा ओवर और इनिंग का तीसरा ओवर करने के लिए तैयार। दूर उस छोर से वो गेंदबाजी करेंगे जहां से इनिंग की शुरुआत की थी। इरफानुल हक बल्लेबाजी में उन्होंने निराश किया दर्शकों को। स्ट्रोक टाइम नहीं कर सके, कई बार उन्होंने रिस्क ली थी बड़ा स्ट्रोक लेने की, रफीक बाबा के खिलाफ, फिर शौकत भट्ट के खिलाफ, लेकिन शौकत भट्ट के द्वारा फंसाए गए जाल में आखिरकार वो फंस गए, फैलाए गए जाल में आखिरकार वो फंस गए। इरफानुल हक देखना है इस वक्त बदला लेने की खुराक में। इरफानुल हक सामने है लतीफ डार तेज कदमों के साथ।
विकेटों पर पहुंचे, ऑप्शन से बाहर की गेंद, गिरने के बाद सीम के सारे गेंद बाहर की ओर निकली, इशारा आ रहा है वाइड का। गिरने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली, वक्त जरूर लिया अंपायर ने, अपने खूबसूरत बाजू हवा में लहराए, इशारा किया वाइड का। अतरी के खाते में एक और रन, टीम का स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कप्तान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे शौकत भट्ट और लतीफ डार सामना करेंगे इरफान का। इरफान ओवर द स्टंप्स लंबे रन अप के साथ गेंदबाजी करेंगे, स्ट्रेट रन अप, तकरीबन 20-22 कदम का रन अप। इरफान उल हक तेज कदमों के साथ इस बार बेहतर लाइन, गेंद को धकेला, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद फील्ड हुई, जहां अब्दुल कयूम फील्ड कर रहे हैं, रन की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। ऑन साइड में फैलाई हुई फील्ड नजर आ रही है, मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट के आसपास, जहां मुदस्सिर लेफ्टी फील्ड कर रहे हैं, मिड ऑन पे आकाश अयूब और डीप फाइन लेग लगाया गया है। यह है ऑन साइड की फील्ड। कुल मिलाकर 3 ऑन साइड में, 6 ऑफ साइड में, 6-3 की फील्ड के साथ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज इरफान उल हक। सामने है लतीफ, इस बार गेंद को खेला, कवर क्षेत्र के ऊपर से खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पहला विश्वनी स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक ऐसा था जिसमें विश्वास था, विश्वास से बड़ा स्ट्रोक। ऑप्शन से बाहर की गेंद, गेंद को खेला कवर क्षेत्र के ऊपर से, गेंद की सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इरफान उल हक बिल्कुल जरूर वो दबाव में होंगे, क्योंकि उन्हें किस लिए गेंदबाजी के लिए लाया गया था, इसीलिए शायद 1-2 विकेट वो निकाल पाएंगे और कश्मीर नाइट्स बैक पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। That's a good line to bowl as far as Irfan is concerned. He's got that pace and the ball nips at that pace. It's good luck for the batsman. Here is Irfan. Shot rising. It's a bumper. Bumper directed at the batsman's body. That is a brilliant ball to bowl. Irfan is in search of wickets. That was not a bad delivery to bowl. He will get a wicket, but he has to bowl a consistent line. बिल्कुल वहाँ कवर 30 गज के दायरे के किनारे पे नहीं था, लगभग शॉर्ट कवर्स में फील्डर था। शायद ये भी एक कारण था कि वहाँ एक अवसर वरना बन सकता था कैच का। एक शॉर्ट पिच बाउंसर करने का जो कोटा होता है गेंदबाज का, वो खत्म हुआ। अंपायर ने ये इशारा किया इरफान उल हक की तरफ से, दूसरी हो जाएगी तो वाइड करार दी जाएगी। इरफान उल हक ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, तेज कदमों के साथ। सामने है शौकत भट्ट, ऑप्शन से बाहर की गेंद, गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में। हालांकि लतीफ डार सामना कर रहे हैं इरफान उल हक का, वो टारगेट करना चाहते थे, मिड ऑफ फील्ड के ऊपर से स्ट्रोक लेना चाहते थे। मिड ऑफ पे खड़े खिलाड़ी खालिद भट्ट, जिन्होंने पिछले ओवर में एक अच्छी फील्ड की थी, जहां निश्चित से 4 रन मिल सकते थे, केवल 1 रन मिला था कश्मीर नाइट्स को, 3 रन बचाए थे उन्होंने अपनी टीम के लिए। आकाश अयूब मिड ऑन पे फील्ड कर रहे हैं, आज कुछ निराश किया दर्शकों को। 0 के स्कोर पर वो आउट हुए थे जब मंजूर पांडव ने उसको उजैर के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाया था। इरफान उल हक की गेंद पैड लाइन पे, पैड लाइन तो बैड लाइन होती है, गेंद को निकाला स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। क्या दर्शनीय स्ट्रोक था, पैड लाइन के आसपास उन्होंने गेंद की थी, ये जानते हुए कि वहां प्रोटेक्शन नहीं रखी गई थी, पावर प्ले चल रहा था। कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल किया लतीफ डार ने, बख्शने वाले नहीं थे इस गेंद पे, और उन्होंने 4 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। जरूर हौसला बड़ा होगा लतीफ डार का। Exactly, it was a beautiful shot, using the wrists and using the pace of Irfan. Irfan cannot err in length at this moment. He needs to bowl that channel, keep the batsman guessing, and he has got the pace. I always turn. That is a bad delivery. Once again, asking to be punished. And Latif Dar had to get a little bit of bat onto that, but he got a good chunk onto that. Turned it away beautifully off the hips. It was a full toss using the wrists, and he has got a beautiful pair of wrists. इरशाद भाई स्लिप कॉर्डन बड़ा पड़ा है, थर्ड मैन लगाया गया है, कवर्स में खिलाड़ी है, मिड ऑफ है, ऑफ साइड में 6 खिलाड़ी थे, 3 ऑन साइड में, फिर भी आप पैड लाइन पे गेंदबाजी करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। That happens when a bowler gets complacent, when a bowler tries too much, and it's 2020 cricket, no margin for error. When you try too much, you are punished. You go for plenty. That's exactly what happened with Irfan. Trying too much and paying the price. A couple of wickets for Panthers club can set the tone. Mudassir. Irfan in the slips. काफी गहराई है कश्मीर नाइट्स की बल्लेबाजी में, लेकिन पैंथर्स क्लब की गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। 1-2 विकेट अगर वो निकाल पाएंगे यहाँ तो कश्मीर नाइट्स बैक पे खड़ी नजर आएगी। इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद को खेला, मिड ऑफ पे एक प्रयास किया था, थ्रो किया, डायरेक्ट हिट लगती तो सवाल जरूर पूछते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी तेजी के साथ खतरा तो हो सकता था, खतरे वाली छोर की तरफ दौड़ रहे थे शौकत भट्ट 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 27 for no wicket. Good partnership up front. Good start for Kashmir Knights. They would not want this game to twist. Mudassir. There is a short fine leg in place. Bowls to Latif. Latif drives and drives handsomely. No chance for any fielder. The ball beats the fielder at mid-off on its way to the boundary for 4. Excellent shot. Using the pace of the bowler once again to good effect. He's playing a gem of an innings. This is his 3rd boundary.
He's looking dangerous. Is Latif Dar. Here is Mudassir. To Latif. Latif drives back to the bowler. Mudassir in his follow-through leaps up. Stops this ball from going to the boundary. There's a slip. Wicket-keeper standing back. A backward point. A straightish point. Extra cover. A short cover. Extra cover has now gone on to mid-off inside the circle. The two fielders permitted outside the circle in the power play are a long on. The long on is coming back. Mid-wicket is dropping back. Mid-wicket and third man are the two fielders outside the circle in the first power play. Here is Mudassir. Left arm over. Bowls inside edge. Inside edge, not far from the leg stump. Wanted to drive, that was a fuller length delivery. Short fine leg was in place. We at JK Sports Time thank Anthem Sports India for sponsoring our local heroes, lifting their spirits and proving to be a brand that promotes cricket in this part of the world. Thank you once again, Anthem Sports India. And we from this platform request other brands to come forward and help our local heroes to flourish. Because in this part of the world, you see youngsters having a least bit of infrastructure available to them, but take nothing away from their talent. They have got immense talent. And Anthem Sports India has done a great job so far. Here is Mudassir. Once again beating Latif Dar with a heave. Coming out of the crease. Cross bat shot. Not making contact. Ball gathered by the wicketkeeper behind the stumps. Ends the over. 4 gone. It's 30 for the loss of no wicket. 4 ओवर का खेल समाप्त. 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. जीत के लिए अभी भी 107 रनों की और ज़रूरत. एंथम स्पोर्ट्स इंडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ के कुछ सितारों को ज़रूर स्पॉन्सर किया, जिनमें 3 सितारे बिल्कुल हमारे सामने इरफानुल हक, आकाश अयूब और एक उभरता सितारा बिलाल पांड्या. शायद गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा. 31 रन, 4 ओवर का खेल समाप्त. अभी भी 107 रनों की और ज़रूरत. 96 गेंदें शेष. बल्ला तब्दील किया है लतीफ़ डार ने. लतीफ़ डार और शौकत भट्ट इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए. शौकत भट्ट अब सामना करेंगे. वहां पहला परिवर्तन देखने को मिल रहा है. शायद जाहिद लेफ्टी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. हाँ, जाहिद लेफ्टी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. इरफानुल हक स्लिप कॉलम में मौजूद. फील्डिंग में परिवर्तन किया गया और लॉन्ग ऑन लगाया गया है जो अब तक 30 गज दायरे के अंदर था. यहाँ डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. यह 2 खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर रह सकते हैं अनिवार्य पावर प्ले में. दोनों खिलाड़ी ऑन साइड में. ऑफ साइड में कारण इस कदर घना लगाया गया है कि परिंदा पर भी मार न सके. लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट. फील्डिंग का मुआयना किया शौकत भट्ट ने. ऑप्शन से बाहर की गेंद अगर मिलेगी तो वो ज़रूर मारेंगे गेंद पे, क्योंकि सारे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर. सिर्फ ये जो दीवार खड़ा किया गया था ऑफ साइड में, उसको पार करना होगा. 4 रन मिलेंगे, लेकिन कतन ऐसा होने नहीं देंगे ये खिलाड़ी. काफ़ी युवा ब्रिगेड लेके यहाँ आए थे इरफानुल हक. विकेट कीपर स्टंप्स के साथ जुड़े हुए हैं. जाहिद लेफ्टी की पहली गेंद फ्रंट फुट पर आए, बड़ा डग बाहर कर दिया. गेंद को केवल बल्ले के बीचों बीच लगने दिया. गेंद फील्ड हुई. जब तक पॉइंट क्षेत्र से खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, रन की कोई गुंजाइश नहीं. स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 31 रन. जाहिद लेफ्टी इस बार सिरा लगा. एक अवसर बना था स्लिप कॉर्नर में कैच लपकने का. गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन. किस्मत के सहारे 4 रन मिले हैं शौकत भट्ट को. अभी भी नाबाद. लतीफ जरूर उसे कुछ समझाते हैं कि आपको लॉन्ग ऑन की तरह खेलना था, लेकिन न मालूम क्यों शौकत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं. एक अवसर बना था कैच लपकने का. किस्मत वाले रहे शौकत, अभी भी क्रीज पे मौजूद. I don't understand the tactics. It should have been a second slip there. Had there been a second slip, it would have been easier. And that too, Irfan is standing a bit forward. He should stand a couple of yards backward, and that was a catch down to his throat. बिल्कुल, अगर आपके पास लक्ष्य छोटा हो तो ऐसे अवसर को आपको तब्दील करना है विकेटों में, तब जाके आप यहाँ जीत सकते हो, वरना वो खा भी रहेगा. जाहिद लेफ्टी काफ़ी खफा, काफ़ी निराश. लेफ्टी की गेंद इस बार फिर से सिरा लगा. कोई गलती नहीं की इरफानुल हक ने, और इस बार ये जो गलती की थी इससे पहले उस पर पर्दा डाल के एक बेहतरीन कैच लपक गया अपने दाएं जानिब जाके. क्या एंटिसिपेशन थी. एक शानदार कैच लपक के शौकत भट्ट की इनिंग का खात्मा कर दिया. कश्मीर नाइट्स को लगने वाला ये पहला झटका. Such a beautiful delivery. These left arm spinners are worth gold for any team. They provide crucial breakthroughs. It reminds me of Sir Jadeja. Look at that guy. He bowls and he bowls beautifully.
These left-hand off-spinners, when they bowl, they go for wickets. And boy, what a terrific delivery that was. Taking the splice of the bat, ballooning up in the air. It was travelling once more, but Irfan has got good height, using his reach, plucking it out of the thin air. That's what they say. Excellent catch to dismiss the skipper of Kashmir Knights. 1 brings 2. Let's wait and watch if Zahid Lefty can pick up one more wicket here. Panthers will be back into the game. Haider Ali, the accomplished batsman of Kashmir Knights. It won't be easy for Zahid Nabi. As they say, 1 brings 2, but a seasoned campaigner. He knows how to tackle the left arm threatening spin of Zahid Nabi. Long on the boundary. Deep mid-wicket on the boundary. Power plays on. Here is Zahid Nabi. Balls! Not far away from the stumps. There is a loud appeal for a stumping. But Haider Ali had dragged his back foot back into the crease. Eventful over so far. A catch went to the right side of Irfan Haq. He grabbed the next one on the next delivery. And this ball is not far away from getting into the wicket. Zahid Nabi. Left arm over. The left arm round this time manages to hit it straight to the fielder at extra cover. Wicketkeeper standing up to the stumps. There's a slip in the form of Irfan Haq. There is a backward point, a straightish point in the form of Abdul. Extra cover, short cover, long on, and deep mid-wicket for the fielders permitted outside the circle. Once again, this time the bowler had switched over the wickets, beating the batsman outside the off stump. Ends the first over, an eventful over from Zahid Nabi. After 6, the score is 35 for the loss of 1 wicket. यहाँ से 1 विकेट और चाहे पैंथर्स क्लब को, तब जाके दबाव में लाया जा सकता है कश्मीर नाइट्स को। हैदर अली एक ऐसे बल्लेबाज हैं, ये बिल्कुल रोहित शर्मा की शैली के बल्लेबाज हैं। अगर ये चल पड़े तो खतरा हो सकता है, लेकिन इसको शुरू में ही उन्हें आउट करना होगा। ये ज़्यादा रुकने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, ये चल पड़ेंगे तो ये बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। लेकिन एक से बढ़कर एक तीर है इरफान हक के पास, पैंथर्स क्लब के पास। पैंथर्स क्लब कतई ऐसा होने नहीं देंगे। मुदस्सिर इस विकेट की तलाश में, जिसकी दरकार है इस वक्त पैंथर्स क्लब को। इरफान हक स्लिप कॉर्नर में फील्ड कर रहे हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को ड्राइव किया, गेंद फील्ड हुई। जब तक मिड ऑफ क्षेत्र से खिलाड़ी अपनी बाएं जानिब दौड़कर गेंद को फील्ड करे, डायरेक्ट हिट लगी थी। रन आउट का सवाल पूछा गया था, लेकिन साफ नकारा कर लिया अंपायर ने। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 35 रन, 5.1 ओवर का खेल समाप्त। तकरीबन 7 रन की औसत से इस वक्त रन बना रही है कश्मीर नाइट्स की टीम। 6.90 की औसत दरकार थी जब दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई थी। मुदस्सिर की ये गेंद ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिड ऑन फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिडल और लेग स्टंप के आसपास, ये जानते हुए मिड ऑन खिलाड़ी दायरे के अंदर था। बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब थी, प्लेसमेंट बढ़िया था। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इकलौता विकेट जो गवाया है अब तक कश्मीर नाइट्स ने वो है कप्तान शौकत भट्ट का विकेट, जिन्हें स्लिप कॉर्नर में इरफान हक ने कैच किया जाहिद लेफ्टी की गेंद पर। जाहिद लेफ्टी का वो काफ़ी अच्छा ओवर था पैंथर्स क्लब की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। मुदस्सिर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज मुदस्सिर। लेग स्टंप पर गेंद थी, नी रोल के आसपास पैड से टकराई। लेग बाइज के रूप में 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 39 for the loss of 1 wicket. Mudassir, left arm over the wickets, is bowling to Latif Dar. Comes in, bowls to Latif. Latif drives and drives elegantly. The ricochet from the fielder, moving towards mid-on. The batsmen take a single. Once again, as you can see, some of the batsmen from Panthers Club with Anthem gear. Anthem Sports India has been one kind brand which has lifted the spirits of some unsung heroes of this part of the world, providing top-class gear to the likes of Irfan Haq, Akash Ayub, Bilal Pandya, and Bilal Pandya, one of the dangerous and fierce strikers of the ball.
We thank Anthem Sports India for this contribution to our cricket. Here is Mudassir to Lateef Dar. Lateef Dar behind the ball, solid in defence. Plays it away, down towards the offside. Extra cover fails. Mid-off fields, beg your pardon. There cannot be any runs. Overdone. 7 gone. It's 30. It's 40 for the loss of 1 wicket. The batsman dismissed is the skipper of Kashmir Knights, Shaukat Butt. Caught by Irfan of the bowling of Zahid Dar. Zahid Dar, tall, lanky, lean youngster, bowls beautifully. Not a single loose delivery in that over. Kept the batsman quiet and honest. And as a result, got the dangerous scalp, the prized scalp of the skipper, Shaukat Butt. यहाँ 8वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। फिर से जाहिद नबी, जाहिद लेफ्टी ओवर करने जा रहे हैं। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के हैदर अली के लिए। स्टंप्स के साथ जुड़े हुए हैं विकेट कीपर, स्लिप कॉर्नर में है इरफान उल हक। तारीफ करनी होगी जाहिद नबी की, क्या ओवर उन्होंने किया था, बांध के रखा था कश्मीर नाइट्स के बल्लेबाजों को, और अंत में उन्होंने एक बड़ी विकेट हासिल की थी कप्तान शौकत बट की। जाहिद नबी राउंड द स्टंप्स, ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेला, वहां कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद की सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक, गैप का भरपूर इस्तेमाल, प्लेसमेंट सुंदर था, किसी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। 4 रन खाते में इस चौके के साथ, स्कोर 45 रन, हैदर अली के खाते में 4 रन। ऑप्शन से बाहर की गेंद थी, रूम मिला, भला हैदर अली कैसे बख्शने वाले होंगे, चपड़ पड़े गेंद पे, गेंद को निकाला, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के दरमियान का जो रास्ता था, कम रास्ता जरूर था, लेकिन टाइमिंग तो लाजवाब थी और प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया था, किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस बार ऊंचा लॉफ्ट स्ट्रोक मिडऑन क्षेत्र के ऊपर से, हालांकि लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद गई दूर उस ओर, सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। It's not that easy to play against the spin, and Lateef Dar was ready for it. Fuller length, Hyder Ali, beg your pardon, was ready for it. He smashed it back over the bowler's head all the way for a 6. That's the kind of confidence you need as a batsman. Lateef Dar and Hyder Ali. Hyder Ali is regarded as the backbone of Kashmir Knights, and he has given us a glimmer of that, a glimpse of that. He's a seasoned campaigner. It was a beautiful shot, not losing his shape, keeping his head still and hitting it through the line for a 6. Not that easy against Zahid Dar. He's one of the leading left-arm spinners along with Javed Jaddu. Needs a bit of a furnace, needs a bit of a moulding. He will be one top-class bowler of the valley. Floats this one up. Lateef and Hyder Ali could not pierce the field on the offside. Here is Zahid. Floats this one up. It's in the air. Not timing it properly. The timing would have carried it to deep mid-wicket fielder though. But all is well that ends well. Ended well on that occasion for Hyder Ali. Score 50 up for Kashmir Knights. It's 52 for 1. Here is Zahid Dar. Ball this one. It's up in the air. Up in the air. Going and gone. Lateef Dar joining the party. Standing tall. And boy, he did not move an inch. The moment it left the bat of Lateef Dar, he knew that it will go a long, long way. Second 6 of the over. But Zahid Dar needs that. He needs to buy a wicket for his team. Here is Zahid. This time outside edge. Moving all along the ground. Down towards the fielder. Fielding in the gully position. No run. And the signal from the umpire. The over from Zahid Dar comes to an end. 8 gone. It's 53 for the loss of 1 wicket. Thank you. चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। बॉलिंग में परिवर्तन अब तक अगर देखा जाए 53 रन, 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। हालांकि यहाँ मेरे स्कोरर कह रहे हैं 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इकलौता विकेट जो गवाया है कश्मीर नाइट्स ने वो है कप्तान शौकत बट, हैदर अली और उनका साथ दे रहे हैं लतीफ डार।
लतीफ डार इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए थे। अब उमर को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। बैकवर्ड पॉइंट के साथ साथ पॉइंट पे भी खिलाड़ी तैनात। कवर्स में एक खिलाड़ी है, हालांकि यहाँ से ऐसा लग रहा है लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट जहाँ एक खिलाड़ी पहरा दे रहे हैं। फाइल लेग बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रही, किस्मत वाले रहे, स्टंप्स की लाइन में नहीं थी। ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद गई विकेट कीपर के पास। हैदर अली एक ऐसा बल्लेबाज है जिसे आप ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। बड़े स्ट्रोक्स लगाने की क्षमता है इसमें, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। उमर एक युवा गेंदबाज है, उसकी कोशिश रहेगी यहाँ हैदर अली की विकेट हासिल की जाए। रन अप में कुछ खराबी, वापस जाना पड़ेगा उमर को इस गेंद को करने के लिए। आकाश अयूब जिन्होंने आज बल्लेबाजी से निराश किया, यहाँ आए दर्शकों को। लॉन्ग ऑन पे वो फील्ड कर रहे हैं। इरफानुल हक बैकवर्ड पॉइंट पे अब्दुल फील्ड कर रहे हैं। कवर्स पे एक खिलाड़ी तैनात, शायद खालिद भट्ट कवर्स में मौजूद। इस बार ये गेंद बैक ऑफ द हैंड स्लोवर, गेंद पे सिर्फ नजरें बनाई रखी, नजरों से गेंद का पीछा किया और जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 58 रन एक विकेट के नुकसान पर। इरफानुल हक हौसला बढ़ा रहे हैं अपने गेंदबाजों का। लॉन्ग ऑन दूर उस ओर जहां आकाश अयूब फील्ड कर रहे हैं। उमर, यह गेंद बढ़िया गेंद, जिनको पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कवर की तरफ किस्मत वाले रहे, बल्ले के काफी करीब से गेंद गई विकेट कीपर के पास। पसीना काफी आता है, गर्मी का मौसम है, बार बार ग्लव्स बदलने पड़ते हैं। हैदर स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे उमर का। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है लतीफ। पिछले ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक लिया था लतीफ ने, जिसपे उन्होंने 6 रन हासिल किए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। उमर फिर से बढ़िया गेंद, सटीक निशाने पे, हाथ खोलने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। गेंद गिरने के बाद एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, गेंद गई विकेट कीपर के साथ। विकेट कीपर स्टंप से काफ़ी दूर, क्योंकि पिच में उछाल ठीक ठाक नज़र आ रहा है। एक दो बड़े स्ट्रोक ज़रूर देखने को मिले, लेकिन सिंगल डबल्स पे काबू किया है पैंथर्स के खिलाड़ियों ने। उमर की गेंद इस बार दिशा से पट के लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला, फाइन लेग क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। किस सटीक निशाने से गेंदबाजी कर रहे थे, उम्दा गेंदबाजी हो रही थी। मजा आ रहा था जब गेंद हवा के सहारे स्विंग होती थी, लेकिन एक खराब गेंद और पूरे ओवर को उन्होंने खराब कर दिया। 4 रन तोहफे के रूप में कश्मीर नाइट्स के लिए और हैदर अली के लिए। हैदर बल्ला हवा में झूलता हुआ, उमर चले। इस बार शॉट, गेंद को खेला, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, पॉइंट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। That's what lack of consistency can do to you. He bowled 3 deliveries, hitting that one spot, the good length spot, and the balls kept climbing. 3 balls on the trot, beating Hyder Ali, and then 2 horror deliveries. These are called as release deliveries. These help the batsman to have a release shot and get rid of the pressure which is mounted by the bowler. This is not required by Panthers club. The match is slipping away from their grab. 72 after the completion of 8 overs. They are scoring at 9 runs per over, which is not bad under the circumstances that they have lost only 1 wicket. Kashmir Knights in the driver's seat at the moment. Panthers club need quick wickets. Aqib is the new man. Bowling change, and Aqib will bowl from the far end of the ground. On strike, Lateef Dar. 72 for 1. 9th over is about to commence. Shot up in the air. The fielder very casual. It should have been caught. It was in the air for a long time. The fielder, look at that, very lazy. Casual, gingerly went to the ball, and as a result, lost to the sides. The ball spun away on its way to the boundary. गेंद काफी देर तक हवा में रही, एक अवसर बना था कैच लपकने का, लेकिन ना ही उसने कैच को लपकने की कोशिश की। जब कैच गिरा तब जाके उन्होंने गेंद को भी जाने दिया विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। ये अच्छा नहीं है पैंथर्स की दृष्टिकोण से। इस बार ये गेंद सिरा लगा, स्लिप कॉर्डन के दरमियान से खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। गेंद की रफ्तार काफी तेज है, देखना है रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Rubbing salt onto the wounds of Panthers club. Consecutive boundaries. First, Mudassir gifting one at deep square leg, and now an outside edge, a genuine outside edge
No slip, and the ball rockets to the deep third man fence for 4. Gone are the days. Gone are the days when the fast bowlers used to be lazy fielders. The next delivery has been turned away beautifully, but it's well fielded at the deep square leg boundary by the fielder coming from there. Single is the result on that shot. Score moving to 81 now. 81 for the loss of 1 wicket. The next delivery, watchfully forward, turns it away onto the onside. This is intelligent batting. Batting at its top class strength. These two are batting according to their will. Here is Akib. Outside the leg stump, struck on the pads. The ricochet goes away down towards fine leg, and the batsmen take a single. Complete control by the two Kashmir Knights batsmen. They have a complete hold onto the game right now. Latif Dar and Haider Ali. Haider Ali is having one more bat of the anthem spots of India. Oh my God, that has gone a mile. Many a mile. Over cow corner. And that has gone out of here. Go and fetch the ball out of the boundary. That is a terrific shot. Haider Ali, you beauty. What an innings this man is playing. Superb. Saw the opportunity. Length ball, clearing the front leg. And away it went. मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की कि उनका जो खेलने का अंदाज़ है बिल्कुल रोहित शर्मा से मिलता जुलता. आप ऐसे बल्लेबाज को ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते. हालांकि पहले ये थोड़ा ज़रूर हड़बड़ा के खेल रहे थे. ऐसा लग रहा था शायद ये नहीं चल पड़ेंगे, लेकिन एक बार ये सेट हुआ तो ये बख्शने वाले नहीं हैं. और नतीजा आपके सामने है. 1 नहीं 2 नहीं, लगभग उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं. तीनों इसी इलाके से. लॉन्ग ऑन को ये ज़्यादा टारगेट करता है. Seasoned campaigner, but looks very, very young. That's the beauty of playing cricket. Haider Ali has stunned one and all here. Nine overs have been bowled, 83 for the loss of 1 wicket. Here's Umar. Bowls a good delivery. Coming in towards the stumps, the batsman behind the line pushes it away back along the track for the bowler to field in his follow through. 83 for the loss of 1 wicket. The pressure clearly on Panthers club. Kashmir Knights are in the driver's seat. Here is Umar for the second time in this over. Slower delivery, well disguised, back of the hand slower, but Latif Dar was equal to the task. Opening the face of the bat, dropping it in front of the approaching Irfan Pollard, and goes through for a single. Gets Haider Ali back on strike. I was telling you, the bats of Anthem have got sting, have got the ping, and these bats are well built. They send the ball very far. What an exquisite cover drive. Cover driving at its best. On the up, slicing it away all along the ground, and no chance for the fielder sweeping at deep point. It went like a rocket. Haider Ali is playing the innings of his life. कश्मीर नाइट्स में एक बड़ा नाम है हैदर अली का. उम्र की बात की जाए, जितना हैदर ने क्रिकेट खूब खेला होगा इतनी उम्र होगी उम्र की. और कलेजा चाहिए ऐसा जब गेंदबाज कम उम्र का हो और बल्लेबाज हैदर जैसा हो तो कलेजा चाहिए गेंदबाजी करने के लिए. हमें तारीफ करनी होगी उम्र की कि किस रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं. बैक ऑफ द हैंड अक्सर बेशतर उन्होंने इस्तेमाल किया है पिछले ओवर में भी और इस ओवर में भी. एक गेंद, हालांकि ये गेंद तो ज़रूर खराब हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी उम्र के दौरान. Umar, promising young talent. You need heart to bowl to such kind of batsmen. Haider Ali is of the stature of those batsmen who do not move much in their stance. They keep themselves still, wait for the ball and hit it through the line. That's what Haider Ali has done so far. Not a single foul shot. Panthers club players, batsmen should learn from this. Umar to Latif. Dar comes in and bowls to Latif. Latif gets a fine inside edge. There is a short fine leg in place for that kind of a shot. Feeds the ball. It cannot be any runs. Overdone. 10 gone. It's 88 for the loss of 1 wicket. Kashmir Knights in complete control of the game. They're cruising along. Ten overs have been bowled. 89 runs have been scored. It's the time for the strategic timeout.
We are live from HMT Cricket Ground here at Srinagar. And we are live on JK Sports Time. The JK Sports Time family doing wonders to bring live action from all the corners of our valley to our valuable viewers. And today is a pre-quarter final match of Poker Sir Knockout T20 cricket tournament between Panthers Club Srinagar and Kashmir Knights. Summary of the match so far. Kashmir Knights bowling first, bowled out Panthers Club Srinagar for a paltry 137. In reply, Kashmir Knights have lost only one wicket, chasing 137. 10 overs. After 10 overs, they're 89 for the loss of one wicket. The lone batsman dismissed so far was Shaukat Butt, who was dismissed by Zahid Dar, the beautiful left arm offie from Panthers Club Srinagar. Apart from that, nothing has gone the way of Panthers Club. It's all Kashmir Knights right from the second over of this match, when Manzoor Pandav dismissed Mudassir Rafiq and Akash Ayub on consecutive deliveries. That is the end of the timeout. Play about to resume. Kashmir Knights are the strong favourites of today's match. But cricket is a great leveller. A wicket or a two. This is the time when the match changed for Panthers Club. They were cruising at this moment of time. They were 103 for the loss of 2 wickets when their 10th over had ended at the time of the break. Isn't it, Nasir bhai? प्लान ए उनका था प्रहार करना. अगर प्लान ए में आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम प्लान ए टू प्लान बी. लेकिन वो स्टक रहे प्लान ए के हिसाब. यही कारण है हर बल्लेबाज आता रहा, प्रहार करता रहा, अपनी विकेट गवाता रहा, और यही कारण है केवल 137 रन और 138 का लक्ष्य. Zahid Dar starts a fresh over. This one has gone, tickled it fine. It will cross over to the boundary for 4. It does go to the boundary for 4. Bad delivery on the pads, and Haider Ali knows how to deal with them. Gets down on one knee, turns it neatly. There was no fielder patrolling that boundary. 4 more runs. That boundary takes the score to 93 now. Zahid Dar. He is the trump card of Irfanul Haq in this match. Here is Zahid. Flights this one up. Inside edge onto the pads. It was a good looking delivery. Flighted delivery. Haider Ali wanted to go over the cow corner. That's the mistake Irfanul Haq committed. This delivery, that's a good delivery. Ball slower through the air. Batsman behind the line of the ball. Deflects it away from the stumps. पिछले ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक जरूर लगे थे ज़ाहिदार के खिलाफ. ज़ाहिदार ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार. इस बार बॉल कर दिया. मैं इसी बात की जिक्र कर रहा था. पिछले ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक जरूर लगाए थे हैदर अली ने, लेकिन इस ओवर में काफी तंग किया था, काफी परेशान किया था हैदर अली को, और खामियाजा भुगतना पड़ा. हैदर अली क्लीन बोल्ड होकर कश्मीर नाइट्स को लगने वाला ये दूसरा झटका. Flatter, faster, skids on. And Haider Ali wanted to cut. No room for cut. The ball kept low as well. And his middle stump is out of the ground. Is this the wicket to lift the spirits of Panthers Club, or is it too late? बिल्कुल अभी भी कुछ गया नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं की खेल है. 1-2 ओवर आपको चाहिए. ये T20 गेम है, ज्यादा देर नहीं लगती है आपको वापसी करने में. मंजूर पांडव आए हैं. ये भी उस लय में, जहां तक अगर चोगल की बात करेंगे, उस लय में उस दिन वो नजर नहीं आते थे, लेकिन हर दिन नया होता है. अगर मंजूर या लतीफ की विकेट जल्दी उन्होंने हासिल की तो लगभग कुछ हद तक हम कहेंगे वापसी कर सकते हैं पैंथर्स की टीम. And Manzoor Pandav is very strong against spin, but he can help Zahid Dar here because he is not in great form. Manzoor Pandav, the big man, striding out into the middle. Panthers Club need a couple of wickets more to bring some spice back into the game. For that, they need the wicket of Latif Dar and Manzoor Pandav. इनिंग की शुरुआत में जो 2 सफलताएं हासिल की थी जब कश्मीर नाइट्स की टीम फील्डिंग कर रही थी मंजूर पांडव ने, तब जाके हौसला जरूर बड़ा होगा. देखना है वो बॉलिंग में जो उन्हें हौसला मिला था, जो जोश मिला था, जो वलवला मिला था, क्या वो बैटिंग में काम आएगा या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न. Here is Zahid Dar. Not far from that off stump, leaving the ball dangerously, exposing his stumps. That's what I have already told you. Manzoor Dar is not strong when it comes to defending. He can hit the ball to a fair distance. Once again, Zahid Dar is playing with the emotions of Manzoor Dar, and it's a brilliant over from Zahid Dar. Excellent bowling. And he has taken that all-important wicket for Panthers Club. 93 runs.
11 overs have been bowled. It's 93 for 2. जाहिद नबी ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे छोड़ पे उन्हें साथ नहीं मिला। जो 2 सफलताएं अब तक हासिल की हैं वो दोनों जाहिद नबी ने हासिल की हैं पैंथर्स क्लब के लिए। लेकिन दूसरे एंड से अगर उन्हें 1-2 विकेटें और मिलती तो शायद इस स्थिति में नहीं होती यहाँ ये टीम। कुछ हद तक मजबूती हासिल कर सकती थी पैंथर्स क्लब की टीम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पलटा पारी है। पहले 10 ओवर्स की बात की जाए तो कश्मीर नाइट्स बैटर पर नजर आती थी जब पहली इनिंग चल रही थी, लेकिन तब से अब तक जो मोमेंटम ओवर नंबर 11 से लेके ओवर नंबर 20 तक मिला था पहली इनिंग में, उसको कायम दायम रखा बैटिंग में भी कश्मीर नाइट्स के बल्लेबाजों ने। 93 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर का खेल खत्म हुआ है। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। 54 गेंदें शेष। जीत के लिए अभी भी 45 रनों की और जरूरत। 45 रन चाहिए। 9 ओवर शेष। आकिब मीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। मुश्किलन 4-5 कदम का रन अप। आदिल की गेंद लेग स्टंप के आसपास, गेंद को निकाला, फाइन लेग पे खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उसके पास गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं। गेंद की सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, ज्यादा बाहर नहीं थी, लेकिन जगह बनाई, ऑप्शन की ओर चले लतीफ डार और गेंद को निकाला फाइन लेग क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर। ये जानते थे कि फाइन लेग के खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, सिर्फ उस खिलाड़ी को पार करना था। उसमें उन्हें सफलता मिली और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 57 रन। 41 रनों की और जरूरत। आदिल मीर, सामने हैं लतीफ। आदिल की गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेला सीधे कवर क्षेत्र की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद, एक आसान सा कैच लपक कर इस तरह से तीसरा झटका लगा कश्मीर नाइट्स को। एक सेट बल्लेबाज लतीफ डार वापस जाते हुए तीसरी सफलता हासिल की है। जहां स्पिनर्स ने बांध के रखा था, कश्मीर नाइट्स के स्पिनर्स ने, वही अगर बात की जाए अब तक जो 3 सफलताएं हासिल की हैं पैंथर्स क्लब के गेंदबाजों ने, तीनों स्पिनर्स की जोली में गए हैं। और कुल मिलाकर मैं कहूं कि आज स्पिनर्स का दिन है। और अब आए हैं खेलने के लिए एक बड़ा नाम बिलाल पांड्या, एक युवा खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी हैं बिलाल पांड्या। स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा प्रहार करते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी जाहिद लेफ्टी जाहिद नबी, वो एक अच्छे गेंदबाज हैं, काफी अनुभव है उनके पास, वेरिएशन काफी अच्छी है। और दूसरे छोर पे आदिल मीर, आसान नहीं होगा उन्हें खेलना। Exactly. But Bilal Pandya is a man from a different planet. He comes set from the dugout. He is a batsman of such kind and quality who can hit the very first ball out of the ground. Here is Akib. Rolls to Bilal Pandya and Bilal Pandya throws his bat. Look at the sound of the bat. The bat swing. Boy, this man is built very, very heavily. काफी हौसला बड़ा होगा धीरज वधान, जो एंथम के हेड हैं। जब उन्होंने कमेंट में लिखा था, बिलाल नॉक इट प्रॉपर्ली, दिस इज द बैट मेड फ्रॉम द सेम वुड विच वी यूज फॉर एमएस। जरूर हौसला बड़ा होगा बिलाल का भी। Exactly. And when this bat will be in the hands of Bilal Pandya, he would get a feel of an international stature. बिल्कुल हो भी क्यों न, युवा खिलाड़ी जोश से भरा पड़ा है, और ऊपर से जब स्पॉन्सर एंथम जैसा हो तो हौसला सातवें आसमान पर। And we thank Anthem Sports India for this, for a gift of wood like this. This is not a piece of wood, this is a sword which murders the ambitions and emotions of many a bowlers. Here is Akib, bowls to Pandya. Pandya turns it away. Look at the ping on this bat, beautiful. Just a flick of the wrists and this ball has gone very, very far. Anthem Sports India doing a wonderful job. Here is Akib Mir once again. Bowls to Manzoor Pandav. Head hanging in the air. Wanted to hit this one over the bowler's head. The ball taking the outside half of the bat. Was in the air for quite some time, but away from the reach of the fielder at mid-on and mid-wicket. No harm done. Over concludes, 12 gone. It's 98 for the loss of 3 wickets. It's down to the last 8 overs now. 48 balls remaining, 40 runs to get. Zahid Nabi continues from the far end of the ground. Will he provide that crucial breakthrough once more? Here is Zahid Nabi. Long on and long off. Bowls to Manzoor Pandav. Manzoor Pandav goes back onto the back foot. Punches this one.
down towards extra cover. No harm done, no runs added. Score stays at 98-3. Here is Zahid Nabi once again. Balls to Manzoor Pandav. Manzoor Pandav wanted to glance this one. Umpire signals. Coming from the far end, it's a wide. Another extra. Takes the score to 99. Zahid. Up to the wicket. Balls to Manzoor. Manzoor sweeps and sweeps beautifully. What a shot that is. Terrific use of the wrists. Getting down on one knee. Sweeping this one. And there is no protection. And the rest is in front of you. 4 beautiful runs for Manzoor Dar. Manzoor Dar is that is among the brand of the cricketers who went on to represent. Oh my word! That has gone many a mile. The ball has been lost. New ball, please. Manzoor Dar, when he hits them big. Look at that ball go into the orbit. The strong man from Bandipora hitting it and sending it back into that direction, into the direction of Bandipora. What a shot that is. Excellent, superb, hard, high, handsome and mighty. That's what the spectators and our viewers want to see. Excellent use of the feet. 1, 2, 3 and bang out of the middle. What a shot. मंजूर पांडव जरूर जाहिद नबी दबा में हुए। जाहिद की गेंद ऑप्शन के आसपास गेंद को खेला, गेंद फील्ड हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। मंजूर पांडव को ये जो उसने गेंद की, बल्ले का जो स्वीट स्पॉट होता है बिल्कुल उसके साथ गेंद टकराई। जो ही गेंद बल्ले से लगी मानो कि इस पे 6 रनों की छाप लगी। It would have been a 6 in any ground of the world. Flights one up once again. Manzoor Pandav is batting differently today. That is the Manzoor Pandav known to many, known to our spectators. Boy, he's playing brilliantly today. In the last game here, he had scored in the last game at Chogal Premier League. He had scored only 11 runs. But today, his team needs him till the end. Here is Zahid Nabi once again. Balls to Manzoor. Manzoor goes onto the back foot, closes the bat face, turns it away onto the onside and settles through for a single. Single takes the score to 111 for the loss of 4 wickets. We'll be back after the azan. $113 for the loss of 4 wickets. Here is Irfan. Bounces this one up to Bilal Pandya. Once again, it's down the leg side. It's another wide. Irfan, since ball 1, he has tried to bowl very, very fast. But then, he has not controlled his line and length. Irfan to Bilal Pandya. Bilal Pandya wants us to head. He's in trouble and he's gone. Irfan has got pace. He bowled a bouncy delivery and bounced Bilal Pandya, who wanted to pull it. But the top edge, the ball went up in the air for an easy catch for Irfan Ul-Haq in his follow-through. Bilal Pandya has been dismissed. But it is too late now.
for the liking of Panthers club. But nothing can be said in cricket. A couple of wickets more can set the tone for Panthers club Srinagar. But only 25 runs needed for the victory. Kashmir Knights would fancy their chances. It's Kashmir Knights' game to lose on from here. Out comes Jan Mohammed, one more seasoned campaigner of Kashmir Knights. He is the aged player as far as the age is concerned from Kashmir Knights. But cricket knows no boundaries. Jan Mohammed has taken the guard from umpire. Will receive the thunderbolts from Irfan ul Haq. Irfan has one fielder at deep fine leg boundary. Short ball coming up. Jan Mohammed plays forward in defence, knocks it away on the offside and settles through for a single. It will be a good contest now between Irfan Pollard and Manzoor Dar. Manzoor Dar hitting a monstrous six in the last over. A gigantic one. 114. 14 for the loss. 114, 24 runs needed for the victory. Delivery. Irfan bouncing this one up. Manzoor Pandav swaying away from the line of the ball, steering it away down towards deep backward point boundary and going through for a single. Reduces the deficit to 23 now. 115 for the loss of 3 wickets. 4 wickets, beg your pardon, because the wicket of Bilal Pandya adds to the tally. Here is Irfan Pollard, right arm over the wicket, comes in, up to the wicket, bowls to Jan Mohammed. Jan Mohammed wants to hit this one away, out of the ground, speaking outside the off stump. Jan Mohammed. Irfan ul Haq going back to the top of his bowling mark. Long on the boundary. Deep square leg on the boundary. Deep point on the boundary. Wide third man on the boundary. Here is Irfan. Bowls to Jan Mohammed. Induces that edge, but there is no one in the slips. The ball crosses over to the boundary. I think Jan Mohammed just opened the face of the bat on that. Played deliberately, using the pace of Irfan ul Haq to good effect and earning himself a boundary. 4 more, ends the over. 14 gone. It's 118, rather 119 for the loss of 4 wickets. 20 more runs needed for the victory, and it will be Akib to continue from the far end of the ground, and Nasir will tell you more about the proceedings. 120, 18 रन और चाहिए 36 गेंदों पर. आदिल किया गेंद इस बार बॉल कर दिया. गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, पूरी तरह से चूके. गेंद लेग स्टंप के साथ जाके टकराई और मंजूर पांडव क्लीन बोल्ड हो गए. आदिल मीर को मिलने वाली है दूसरी सफलता. Is there a twist in the tale? Manzoor Dar has been dismissed. Bilal Pandya and Manzoor Dar are back into the hut now. Are we to witness another cliffhanger here at HMT? हालांकि अभी भी कुछ बैटिंग लाइन जरूर बची हैं. उज़ैर का आना बाकी है. मुश्ताक झंडा, एक ऐसा नाम जिन्होंने सनसनी मचाई है काउसा के इलाके में. बहुत ही उम्दा क्रिकेटर हैं वो. और इम्तियाज़ मल्ला कौन बोल सकता है, उसके पास तजुर्बा भी काफ़ी है. अब आए हैं बैटिंग करने के लिए इम्तियाज़ मल्ला, उन्हें साथ देना होगा. और दूसरे छोर पे जान मोहम्मद अभी भी मौजूद, लेकिन पलटाबारी है कश्मीर नाइट्स का. केवल 18 रनों की और ज़रूरत. यहाँ से अगर 1-2 स्ट्रोक्स और लगेंगे तो मैच जीत की दहलीज पे पूछेगी कश्मीर नाइट्स की टीम. लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता. अगर 1-2 विकेट जल्दी गिरेंगे तो कुछ हद तक राहत की सांस ज़रूर लेने को मिलेगी पैंथर्स क्लब को. पैंथर्स क्लब के विकेट कीपर स्टंप्स के काफ़ी करीब विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. इरफान उल हक जो लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्ड कर रहे हैं. कप्तान सीमा रेखा पे शायद इसीलिए फील्ड कर रहे थे क्योंकि इससे पहले मंजूर पांडव खेल रहे थे. वो उस इलाके को ज़्यादा टारगेट करते थे, सोचते थे कहीं कैच लेने का अवसर मत बनेगा. लेकिन तमाम किया वो काम आदिल मीर ने. आदिल मीर फील्डिंग नए सिरे से सजाई जा रही है इम्तियाज़ मल्ला के लिए. इम्तियाज़ मल्ला शांत मिजाज के खिलाड़ी, देखना है क्या कर पाएंगे. आदिल मीर की गेंद इस बार फ्रंट पर आए. देखिए यह है स्ट्रोक. रक्षात्मक तरीके से गेंद को वापस धकेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया. रन की कोई गुंजाइश नहीं. आदिल मीर की गेंद, शॉर्ट गेंद को मोड़ा, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बढ़िया स्ट्रोक, शानदार प्लेसमेंट, लाजवाब टाइमिंग.
इस चौके के साथ अब जो फासला रहा जीत का, केवल 14 रनों की और ज़रूरत कश्मीर नाइट्स को यह मैच अपने नाम करने के लिए। 14 रनों की और ज़रूरत। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं जान मोहम्मद, इम्तियाज़ मल्ला सामना करेंगे आदिल मीर का। आदिल मीर सामने है इम्तियाज़, फिर से शॉट, गेंद को मोड़ा, गेंद की स्कैलर क्षेत्र की तरफ, वहाँ खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, दिशाई इन थ्रो, तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं इम्तियाज़। अब सामना करेंगे जान मोहम्मद। जान मोहम्मद सामना करेंगे आदिल मीर का। लेग स्टंप के आसपास कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा, मुदस्सिर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, हल्का सा मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। काफी करीबी मामला था, बड़ी तेजी के साथ 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ अब जो फासला रहा, 11 रनों की और जरूरत। 11 रन चाहिए जीत के लिए। जान मोहम्मद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है इम्तियाज़। 11 रनों की जरूरत। आदिल मीर और स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, पैड लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि 2 रन से ही काम चला रहे हैं। इस बार बेहतर लाइन, गेंद में उछाल नहीं मिला, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ ओवर का खेल समाप्त। 127 रन। अब जीत के लिए चाहिए 11 रन। 30 गेंदें शेष, जीत के लिए चाहिए 11 रन। क्रीज पे मौजूद जान मोहम्मद और इम्तियाज़ मल्ला उन्होंने अपना हेलमेट जो है वो तब्दील किया। देखना है कौन गेंदबाजी करने के लिए आए। हाँ बिल्कुल, खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इरफानुल हक अपना आखिरी ओवर करने के लिए तैयार। इरफानुल हक अपना आखिरी ओवर करेंगे। जीत के लिए चाहिए 11 रन। सामने हैं इम्तियाज़। It should be a walk in the park for Kashmir Knights now from here on in, because they need only 11 runs to win. 15 overs have been bowled, 127 for the loss of 5 wickets. Kashmir Knights need another 11 runs for the victory. Irfan al Haq for the last time in this match, particularly, and maybe for the last time in this tournament as well, because it's a knockout game and any team which loses from here will be knocked out from the tournament. Irfan al Haq to Imtiaz Malla. Here is Irfan, right arm over the wicket, bowls to Imtiaz cuts. There is protection in the form of Abdul. Fields, throws it in. Batsman wanted a second run. It's wisely sent back by John Mohammed. There cannot be any further runs, only a single accrues. That single takes the score to 128. 128 for the loss of 5 wickets. Here is Irfan. Bowls to John Mohammed. John Mohammed rights the bounce. Steers it away. Down towards backward point. The batsman settles through for a single. Reduces the deficit to 9 now. They further need 9 runs to win. A miracle will save Panthers club from defeat here. They were par with the bat, below par with the bat, and below par with the ball as well. Here is Irfan. Bowls, that's a good delivery. Into the block hole. Imtiaz Malla was equal to the task. Digs it out nicely. Score stays at 127. A couple of hits to the fence will seal the deal as far as Kashmir Knights are concerned. Excellent performance, clinical performance. First with the ball and then with the bat. It was a crunch game. It was a big game. Panthers club lost the course. Collapsed. And were bowled out for 137 in the 20th over. Could not play the whole cut-off 20 overs. Wonderful bowling performance and then the batting performance so far by Kashmir Knights team. They will be in the quarter-finals if they win from here. Here is Irfan. Bowls to Imtiaz. Imtiaz once again steers this one down towards backward point. Zahid Nabi fields. The batsmen go through for a single. Ends the over. 16 gone. It's 131. 131 for the loss of 5 wickets. Need further 7 runs for the victory. 7 runs for the victory. Plenty of overs remaining. 24 balls, 7 runs to get, and plenty of wickets as well in the bag. Panthers club need 5 wickets for a win.
which is most unlikely at this juncture. And Kashmir Knights are on course of a well-earned victory in this pre-quarter final of Hokersar T20 knockout cricket tournament at HMT. Here is Umar to give it a last try. He'll be bowling to Imtiaz Mallah. Bowls to Imtiaz. Imtiaz drives straight to the fielder, who had to move towards his left to get rid of the ball. Fields, throws it in, single takes. Now Kashmir Knights are 6 runs away from the victory. A big hit to the fence will seal the deal. Panthers club fielders back of the hand delivery. Once again, intelligently played by Jan Mohammed. Behind the line, solid in defence. On the offside, knocks it in front of the fielder and goes through for a single. That's the brand of cricket you need. That's the brand of cricket Australians play. They never give up till the last ball is bowled, until the last run is scored. That's how cricket is played. Panthers club should get a lot of inspiration from Kashmir Knights batsmen. They played sensibly and responsibly. Here is Umar. Bowls to Imtiaz. Imtiaz goes behind the line, opens the face of the bat and guides it away straight to Irfan at backward point. There cannot be any runs. 133. 5 more runs needed for the victory. Panthers club are now up for the last rites of this match. Here is Umar. To Mallah. Mallah wanted to swing. Is beaten outside the off stump. Umar. Irfan. Muddassir. They tried very hard, but the score was a paltry 137. And as a result, they could not make inroads. Here is a lovely shot. Will it go to the boundary? It does not go to the boundary. Akash Ayub cuts it, throws it in. Single means only 4 runs away from the victory now. One 134 for the loss of 5 wickets. Omar bowls to Jan Mohammed, who goes behind the line, shows the full face of the bat, plays it defensively, overdone. 17 gone. It's 134. 4 runs needed for the victory from 18 balls. It should be a walk in the park. Very, very easy. The icing on the cake is now clear. Kashmir Knights would not have wanted anything more than this. They bowled superbly. And one time, Panthers club were cruising at 103 for the loss of 2 wickets. And how Kashmir Knights come back into the game. A one-sided game, apart from the 10th over of the Panthers club innings. Here is Muddassir. This time it has been hooked. That's a beautiful shot. And the game is over. With that boundary, the game should be over. We'll wait for the scorers to confirm. 1 run needed. The scores are levelled. 137 for the loss of 5 wickets. And Kashmir Knights are on the brink of a huge victory in the pre-quarter final of Hokersar T20 knockout cricket tournament here at HMT. Game done, game over, and Kashmir Knights have reached into the quarter-finals of Hokersar T20 knockout cricket tournament here at HMT. Confirmation? Yes, confirmation from the scoreboard. Beautiful clinical performance. Clinical performance from Kashmir Knights. They were set a target of 138 to win from their allotted 20 overs. And boy, how well they have played. Some exceptional innings by Haider Ali, Lateef Dar, and then Imtiaz Mallah and Jan Mohammed had the icing on the cake. Kashmir Knights defeating Panthers Club Srinagar by 5 wickets and advancing to the quarterfinals. Your views, Nasir? 138 रन का लक्ष्य मिला था उन्हें चेज करने के लिए. ऐसे लक्ष्य को अगर आपको डिफेंड करना होगा तो आपको शुरुआती झटके चाहिए, जो कश्मीर नाइट्स को लगे नहीं. ये भी एक कारण रहा कि हार का मुंह देखना पड़ा पैंथर्स क्लब को. कुल मिलाकर जो पहले 10 ओवर थे वो काफ़ी अच्छे गए पैंथर्स क्लब के लिए. अगर पहले इनिंग की बात की जाए, फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रख पाए और लगातार जो स्पिनर्स हैं, चाहे रफीक बाबा हो या बट शौकत हो, एक के बाद एक झटका उन्होंने दिया पैंथर्स क्लब को. केवल 137 पे उनकी पारी सिमटी और ये सौभाग्य में कहूँ कश्मीर नाइट्स का कि एक बड़ा लक्ष्य उन्हें चेज करने के लिए नहीं मिला. अन्यथा यहाँ कठिनाई हो सकती थी उनको भी चेज करने के लिए, क्योंकि पिच में अनइवन बाउंस जरूर था. The summary then of the match. The toss was won by Panthers Club Srinagar. They decided to bat first and they were bowled out for 137 in the 20th over. They could not complete their quota of 20 overs. In reply, the Kashmir Knights batsmen came and played responsibly
hit the odd boundary, took the bowlers of Panthers club under pressure, and then defeated them in the end by 5 wickets, thus winning the match and advancing to the quarterfinals of Hokers T20 cricket tournament here at HMT. We'll be back in any other match of this tournament. Till then, have a good time ahead. Stay home, stay safe. Khuda Hafiz.